So here we are discussing Unit 1 of our course of Mathematical Analysis in Economics. So in explaining the use of mathematics, the importance of mathematics in economics theory, I am elaborating here some points which you have to keep in mind, like for any economic problems. Okay, mathematics provide the foundations of empirical proposition about economic variables. So जब हम कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है. सो इन दैट केस व्हेन वी आर यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स, व्हेन वी आर डूइंग मैथमेटिकल एनालिसिस, तो वो रिलेटिवली आसान हो जाता है फाइंड करना, क्योंकि हम मैथमेटिकली उन वेरिएबल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें फाइंड कर सकते हैं. Second point is economists construct mathematical representation of markets and communities to understand better how they work. तो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आप ले लीजिए, तो वहाँ पे मार्केट्स होगी, वहाँ पे स्टेट होंगे, वहाँ पे कम्युनिटी होगी, वहाँ पे कंट्री होगी, कोई भी केस होगा ना. तो व्हेन वी आर यूजिंग मैथमेटिक्स, तो हम उसे मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं उस प्रॉब्लम्स को, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो डाउन हो जाए और हम सॉल्व अच्छे से कर लें. ठीक है. तीसरा पॉइंट है मैथमेटिकल मॉडल फोर्सेस द इकोनॉमिस्ट टू डिफाइन टर्म्स प्रिसाइजली. कोई भी टर्म्स है, कोई भी इकोनॉमिक टर्म्स है, वो जनरली आप कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, वेदर यू रीड एनी थ्योरेटिकल पेपर और यू रीड एनी एम्पिरिकल पेपर्स, it becomes very monotonous. But when you use mathematics, it provide a soul to the paper, because it defines the relative term, जो भी terms discussed हैं उस papers में प्रिसाइजली, और उसे हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं. वो फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करता है एंड न्यू थ्योरेटिकल आइडियाज़ को जनरेट करने में भी हेल्प करता है. तो मैथमेटिकल टूल इज़ अ पावरफुल टूल फॉर गेनिंग इंसाइट फॉर किसी भी मॉडल से हमें जो इंसाइट चाहिए, क्योंकि अगर कोई सिंपल अगर मैथमेटिकल टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी इंसाइट जो हमें मिलेगी वो बहुत वेग मिलेगी, बहुत सब्जेक्टिव मिलेगी. लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टूल यूज़ करें तो और ब्रॉडर इंसाइट्स हमें मिल सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो मैथमेटिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स को काफ़ी अप्लाइड बना देता है, काफ़ी प्रैक्टिकल बना देता है, काफ़ी प्रिसाइज बना देता है. अभी चलते हैं. तो ये हम एग्जाम्पल डिस्कस किए हुए हैं यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स में. रोल ऑफ ये जो कंज्यूमर चॉइस कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसे हम ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. So here we are discussing two-dimensional model of consumer choice. Let x1 be a variable represents the amount of good 1, x2 be a variable represents the amount of good 2. Then pair x1 x2 represent the choice. This is the amount of good 1, this is the amount of good 2. This represent the choice of the amount of both good. इसे हम commodity space भी कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं हो चाहे 2 6 हो या 1 0 हो, इसे हम टू डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली. जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, दो कमोडिटी स्पेस हमने लिया, एक 2 6 लिया, एक 5 3 लिया, इसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है. कमोडिटी स्पेस कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमोडिटी स्पेस. तो ये हमें फ़ायदा होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का इकोनॉमिक्स में, कि हम किसी कमोडिटी बंडल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली. सो हियर वी आर डिस्कसिंग कंज्यूमर चॉइस प्रॉब्लम. तो चॉइस सेट हम कैसे डिफाइन करते हैं. सपोजेड हमारे पास दो अमाउंट ऑफ गुड 1, अमाउंट ऑफ गुड 2 है बंडल का. इसका प्राइस P1 है, P2 है. यहाँ पे जो है मैक्सिमम इनकम जो अवेलेबल है, जो हम इनकम अवेलेबल है वो है कैपिटल M. तो कॉस्ट क्या हो गया कंज्यूमर का, P1 x1 प्लस P2 x2. दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू M. ये दिस आर बजट सेट है. तो हम ग्राफिकली किसी भी कमोडिटी स्पेस को एक्सप्लेन करते हैं. तो दिस इज आवर बजट लाइन. इससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते. यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स हैं, दिस इज़ इकोनॉमिकली इनफिजिबल, ये फिजिबल नहीं है क्योंकि ये बजट लाइन से बाहर है. सो दिस इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ये हमारे पास सपोज कुछ एक इनकम रहेगी जो मैक्सिमम रहेगी, और गिवन हमारे पास जो रिसोर्स हैं जो कि स्कैर्स हैं, उसे हमें कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है.
सो यहाँ पे हमने चॉइस से डिफाइन किया है फोर बंडल x1 एंड x2, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये इनइक्वालिटी है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये कॉस्ट है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू m, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस डिफाइंस द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवर कंज्यूमर चॉइस प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड चाहते हैं। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम कोई भी नंबर जो जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम रियल नंबर कहेंगे। जैसे कि सपोज दैट नेचुरल नंबर्स, सम काउंटिंग नंबर्स भी करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। इंटीजर्स जैसे कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, जिसे हम इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, इसे हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। And rational number which can be written in the form of a by b, where b should not be equal to 0 and a and b are integers. So these are the example of real numbers only, our natural number, integers and rational numbers. Now move to the another concept, the decimal system. Any number can be written in the form of decimal system, or you can say the base 10 system. Suppose that let's take a natural number like 1784. This can be represented by the decimal system or the base 10 system, like 1 into 10 to the power cube, 7 into 10 to the power 2, plus 8 into 10 to the power 1, plus 4 into 10 to the power 0. This can be written as 1000 plus 700 plus 80 plus 4, 1784. Any number, any natural number, any rational number, any real number can be represented by the decimal system or the base 10 system. This is the representation of a rational number, which can be done by this. Now move to the next slide. Inequality. This is a very important concept. Inequality basically helps to represent any relation between numbers or expression, like 2 should be always less than 4, 3 should be always greater than 2. These are the relationship between the numbers, or you can say in any expression like x minus 2 should be always greater than equal to 0. This is 2. Another relation, x should be greater than equal to 2. So this is basically a symbol used to express the relationship between numbers or expression. Now move to another concept, intervals. Be it any number, take a and b, represent it on the number line, a and b. Any number between these two numbers can be represented mathematically by the concept of intervals. Like if I represent it as ab interval, this is a closed interval, like it includes all the numbers between a and b and also a and b itself. There are another kind of different kind of interval representation, like this semi-open, this all open intervals. Open intervals includes all the number between a and b but not includes a and b, and this is notation like name open, close, half open, half, and this AB is open, like it includes all the number between A and B but not A and B. This includes all the number between A and B and A and B also. So like this, we can define different intervals representation. Let's come to the another concept, absolute value. You must have heard of the term modulus, which can be represented by this, that it should always be positive and all, which we learned in our 12th class. Here comes another concept of absolute value. Be it any number, take it as a, its absolute value should be equal to a if a is greater than 0 and minus a if a is less than equal to 0. This is less than equal to 0. It basically measures the distance between a and the origin. Like it basically measures the distance between a and the origin a. If there are two numbers like x1, x2, it basically measures the distance between these two numbers. So many examples are given. You can have a look and
see yourself. Now comes another concept, aspects of logic. When we consider the concept of logic, first term came to our mind is propositions. What is proposition? Proposition is any assertion, any statement which are either true or false. कोई भी proposition आप लो, कोई भी statement लो, अगर true है या false है तो वो proposition है. कोई भी statement like tomorrow is Monday, today is Sunday, like any mathematical expression like x square minus 1 should be equal to 0. This is a proposition and happens to be true if x is equal to 1 or minus 1, and if x is anything other than 1 and minus 1, this is also a proposition but a false proposition. Now comes to the concept of implication. This is another concept. In a logical reasoning, it keeps back of where the relation are moving. When we are explaining a relation, it is a continuum of events. So it keeps check the event how it is moving. We can represent it by implication symbol. This can be represented as this. It helps to find the mathematical relation proposition in a chair. So like if P and R are two propositions such that whenever P is true, R is necessarily true. In this case, we can write P imply Q. This is a continuum of event representation. Or we can say if P then Q, like if P occurs then Q, P implies Q, or Q is a consequence of P. Like if x square is equal to 0, this implies that x is equal to 0. If xy is equal to 0, this implies x is equal to 0 or y is equal to 0. Like this implying a relation. Like if x is a healthy person, x is breathing. So this in this type of logical reasoning, if it represents the relations which are moving. और जब हम मैथमेटिकली चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इम्प्लीकेशन सिंबल्स हमेशा लेते हैं. तो बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई स्टेटमेंट आगे बढ़ रहा है तो क्या किसे कौन इम्प्लाई कर रहा है. इससे ही आगे जाके दो कंसेप्ट और आते हैं, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन. P is a sufficient condition for Q if P imply Q. अगर P Q को imply करता है, like if Q is a consequence of P, then P is a sufficient condition for Q. Q is a necessary condition for P if P imply Q. If P अगर Q imply कर रहा है तो there are also many conditions, but Q is a necessary condition for P. Okay, but not sufficient. Like if xy is equal to 0, x is equal to 0 or y is equal to 0. So here either x is equal to 0 or y equal to 0 or both are necessary condition for xy is equal to 0. If xy is equal to 0, then it's sufficient that x is equal to 0 or y is equal to 0. So okay, so if x is equal to 0, then also xy is equal to 0. If y is equal to 0, then also xy is equal to 0. If both equal to 0, then also xy equal to 0. So these are the necessary condition for xy is equal to 0. But if xy is equal to 0, then it is sufficient that x is equal to 0 or y is equal to 0. So this is a very important mathematical representation regarding logic is concerned. Now move to another slide.